And this is the question of curvature. Here we have to find the radius of curvature at the point PR on the spiral p square equal to r power 4 upon r square plus a square. So first we write this p square is equal to r to the power 4 divided by r square plus a square. Now with taking square root of this, we get p is equal to r square divided by under root r square plus a square. So now we differentiate with respect to r, because we know that formula for the radius of curvature of pedal equation is rho is equal to r into dr by dp. So first we find here dr upon dp. So we differentiate this with respect to r. So we get here dp upon dr is equal to here d by dr of r square upon under root r square plus a square. Now we using quotient formula for the derivative. So this can be written as dp upon dr is equal to first denominator, that is r square plus a square, into d by dr of numerator, that is r square, minus numerator, that is r square, and d by dr of denominator, that is under root r square plus a square, upon denominator square, that is r square plus a square. Here we using formula for the differentiation of quotient function. So first we write denominator into d by dr of numerator, that is r square, minus numerator r square, and d by dr of denominator, that is under root r square plus a square, upon denominator square. So this is r square plus a square. Now we solve this, we get here dp upon dr is equal to under root r square plus a square. Now we differentiate this r square with respect to r, we get 2r minus r square, and its differentiation of under root r square plus a square with respect to r can be written as 1 upon 2 under root r square plus a square. Now we differentiate this r square plus a square, we get 2r upon denominator, that is r square plus a square. आप देख सकते हैं यहाँ आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r हो गया, और ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आर के रिस्पेक्ट में होगा 1/2 रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 2r होगा, और ए स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. Now these two cancel by these two. Now taking here LCM, so we get dp upon dr is equal to 2r multiplied by r square plus a square minus this r square into r, this is r cube, divided by this r square plus a square and this under root r square plus a square. Now this can be written as dp upon dr is equal to this 2r into r square 2r cube plus 2a square r minus r cube upon this is r square plus a square whole power 3/2. Now we know that dp upon dr is equal to this 2r cube subtract r cube, we get r cube plus 2a square r divided by r square plus a square whole power 3/2. So this can be written as, taking common here r, we get r square plus 2a square divided by r square plus a square whole power 3/2 is equal to dp upon dr. So we find here reciprocal of this dp upon dr. So we get dr upon dp is equal to r square plus a square whole power 3/2 divided by r into r square plus 2a square. Now we take this r in the left hand side, so we get r multiplied by dr upon dp is equal to r square plus a square whole power 3/2 upon r square plus 2a square. So we know that rho is equal to r multiplied by dr by dp. So radius of curvature of the given curve is r square plus a square whole power 3/2 divided by r square plus 2a square. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन कर्व है पी स्क्वायर इक्वल टू r पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है,
ये पीडल इक्वेशन है करके इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है पॉइंट पी आर पर। तो पहले हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगेगा, तो आर की पावर 4 का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर के रूप में, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आर इंटू डी आर बाई डी पी निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, so we get dp upon dr is equal to d by dr of r square upon under root r square plus a square. On the right hand side we use quotient formula for the differentiation. So first we write denominator, that is under root r square plus a square, then d by dr of numerator, that is r square, minus numerator, that is r square, into dr by d by dr of under root r square plus a square upon denominator square. So when we square of this, so this square root cancel. Now this differentiation of r square with respect to r, this is 2r, and here differentiation of r square plus a square with respect to r is 1 upon 2 under root r square plus a square. आप देख सकते हैं रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, अपॉन डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. Now we taking LCM in the numerator, so LCM is under root r square plus a square. So this under root r square plus a square multiplied by under root r square plus a square, so this gives r square plus a square, and this r square multiplied by r gives r cube. Now we multiply and open this bracket, so 2r multiplied by r square 2r cube, 2r multiplied by a square 2a square r minus r cube, upon this r square plus a square and this r square plus a square under root, so power will be added up, so power is 3 by 2. So 2r cube minus r cube, this is r cube, plus 2a square r upon r square plus a square whole power 3 by 2. Now taking common r from the numerator, we get r square plus 2a square, and we find reciprocal of this dp upon dr. So dr upon dp is equal to r square plus a square whole power 3 by 2 upon r and r square plus 2 square. Now ये राइट हैंड साइड पे जो r है आपका, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो r इंटू डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3 by 2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2a square. Now we know that radius of curvature for the pedal equation of curve rho is equal to r into dr by dp. So r into dr by dp is this one. So radius of curvature of the given curve is r square plus a square whole power 3 by 2 upon r square plus 2a square. Thank you.